students, how are you? I hope you all are good. Children, this is your social science book and this is the history part. This is chapter 10, India after independence. और चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर क्लास में समझा दिया, तो अब मैं आपको आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज दे रही हूँ। ये एक्सरसाइज आपकी हिस्ट्री बुक में पेज नंबर 140 में दी गई है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन 1। नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड। जब हमारा देश नया आज़ाद हुआ था तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, तो हमें 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताना है। आंसर: 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। 8 million refugees had come into the country from Pakistan. These people had to be found homes and jobs. Second, the Maharajas and Nawabs of the princely states, almost 500, had to be persuaded to join the new nation, and a political system had to be adopted which would best serve to the hopes and expectations of the Indian population. So children, ये आपके 3 जो मेन प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी समझाया था। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ रीड करके बता रही हूँ। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप क्लास में पूछ लेंगे। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। आंसर: द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देन फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको जो दिए गए हैं तो फिल इन दी ब्लैंक्स में यहाँ आप फिल करेंगे। Subjects that were placed on the Union list were taxes, defense, and foreign affairs. B. Subjects on the concurrent list were forest and agriculture. C. Economic planning by which both the state and the private sector played a role in development was called a mixed economy model. D. The death of Potti Srimallu sparked of such violent protest that the government was forced to give into the demand for the linguistic state of Andhra. Children, इसके बाद ट्रू फॉल्स दिए गए हैं आपकी बुक में। चलिए देखते हैं। At independence, the majority of Indians lived in villages. So this is true. Second, the Constituent Assembly was made up of members of the Congress Party. This is false. C. In the first national election, only men were allowed to vote. This is false. D. The second 5-year plan focused on the development of heavy industry. This is true. So children, ये आपके true false हो गए। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखेंगे। What did Dr. Ambedkar mean when he said that in politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality? Children, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिक्स में हमें इक्वालिटी होनी होगी और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में हमारे पास इनइक्वालिटी होगी। तो क्या उनका मतलब था ये कहने का? तो देखते हैं चिल्ड्रन, मैं आपको यहाँ रीड करके बता दे रही हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फिर यदि आपको इससे कुछ पूछना होगा, कुछ डाउट होगा, तो आप क्लास में क्लियर करेंगे। मैं क्लास में आपको इसे और एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी accompanied बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड to the removal of other inequalities such as between rich and poor or between upper and lower caste. He believed that India needed to work towards eradicating all forms of inequality in the economic and social spheres. Only then would the equality granted by the Constitution in the sphere of politics
that is one vote for every adult Indian citizen, be of any value. Otherwise, India would just be a land of contradictions, following the principle of one man, one vote, and one value in its political life, and denying the principle of one man or one value in its economic and social life. So children, इस तरह से जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना था वन मैन और वन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वन मैन वन वोट और वन वैल्यू होनी चाहिए। और पूरा जो है ये आप लिख लेंगे, क्योंकि उस वक्त मैंने पढ़ाया था कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें डालने के बारे में सोचा। फिर है आफ्टर इंडिपेंडेंस वाई वॉज देयर a reluctance to divide the country on linguistic lines? Answer: in the 1920s, the Congress had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. However, after independence, it did not take any steps to honor this promise. There was a reason for this. India had already been divided on the basis of religion. The joy of freedom had come along with the tragedy of partition. This partition had led to the killing of 1 million people in riots. Fresh divisions were not considered to be feasible. Congress leaders believed that any further divisions of the country would only disrupt its unity and progress. They felt that the need of the hour was for India to remain strong and united and work towards becoming a nation, and anything that hindered the growth of nationalism had to be rejected. Children, now question number 7. Give one reason why English continued to be used in India after independence. Answer: people of the South, those who could not speak Hindi, opposed Hindi as national language. They threatened to separate from India if Hindi was imposed on them. The Constituent Assembly finally decided that Hindi would be the official language of India and English would be used in the courts, the services and communications between one state and another. Children, हमें एक रीज़न देना है कि हमारी स्वतंत्रता के बाद इंग्लिश को क्यों कंटिन्यू रखा गया। तो साउथ के जो लोग थे वो हिंदी नहीं बोलते थे और हिंदी को वो पसंद भी नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का विरोध किया था। और इसलिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस डिस्प्यूट्स पर चर्चा कर रही थी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज ना बना करके उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए और इंग्लिश जो है उसे कोर्ट्स में, सर्विसेज में, कम्युनिकेशन के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इन चीज़ों के लिए उसे रखा जाए। इस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद भी यही कारण रहा कि जो इंग्लिश थी वह कंटिन्यू की गई। फिर है हाउ वॉज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विजुअलाइज्ड इन द अर्ली डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस? आंसर: the economic development of India visualized in the early decades after independence were objectives: lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial base were among the major objectives of new nation. Planning Commission and 5-year plans. A planning commission was set up to help design and execute suitable policies for economic development. Mixed economy. A mixed economy model was agreed upon. In this economic model, both the state and the private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. So children, here is this chapter is finished. In the next video,
we will do the exercise of the another chapter. Till then, good day. You have to complete your fair copy of this chapter.